Hello everyone. Today we're going to start the 12th standard syllabus for the chapter Pair of Straight Lines. In this lecture, we are going to look at the combined equation of a pair of lines. वो खत्म होने के बाद हम also homogeneous equation of degree 2 के बारे में पढ़ेंगे. So let us look at the first part. What is the combined equation of a pair of lines? तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे पास अगर दो लाइंस है, let's say this is line 1 and let's say that this is line 2, then मैं ऐसा एक इक्वेशन निकालना चाहती हूँ जो दोनों लाइंस को साथ में रिप्रेजेंट करे. ठीक है, तो इस रीजन के लिए हम लोग एक कंबाइंड इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं दो लाइंस के लिए. So an equation which represents two lines is called as the combined equation of those two lines. अभी ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा इनको? तो इसके लिए हमारा जो नया इक्वेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि जो सारे पॉइंट्स है L1 पे एंड जो सारे पॉइंट्स है L2 पे, they should satisfy this new equation, this combined equation. So suppose u is equivalent to a1x plus b1y plus c1 and v is a2x plus b2y plus c2 and suppose ये जो L1 है इसका इक्वेशन is u is equal to 0. मतलब ये a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. This is the equation of a line in the standard format, right? And जो L2 line है that is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. That is v is equal to 0. Then the combined equation is defined as u into v is equal to 0. ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक लाइन में सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है एंड एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड उसको मल्टीप्लाई करना है उन दो लाइंस के लिए एंड इक्वल टू 0 गिव्स अस द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइंस. Now let us look at how does this make sense. ये definition, how does this apply actually? So for that we will look at a theorem. This theorem states that the equation u into v is equal to 0 represents the combined equation of lines u is equal to 0 and v is equal to 0. Okay, so suppose मेरे पास दो lines है. First line is basically going to be u is equal to 0 and the second line is going to be v is equal to 0. Okay, where u is that a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, right? And v is equal to a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So let me just write that down. So consider the line u is equal to 0, that is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and दूसरा line is v is equal to 0, that is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Okay, then in this case हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग को दोनों तरफ से प्रूव करना है कि कोई भी पॉइंट जो u पे है वो इस कंबाइंड इक्वेशन पे है, दैट इज uv इज इक्वल टू 0 एंड हमें ये भी दिखाना है दैट अगर कोई भी पॉइंट v पे है वो भी होगा इस uv पे. ऑल्सो वी वांट टू शो दैट इफ देयर इज एनी पॉइंट ऑन uv इज इक्वल टू 0 तो वो कोई ना कोई एक लाइन पे है. ठीक है, बोथ वेज वी वांट टू शो, तो ये फिर हम बता पाएंगे कि इट इज द कंबाइंड इक्वेशन. So for that, we will start with some point, let's say on U. So consider a point P that lies on this line U is equal to 0. Okay, so we can start by doing this. So let P x1 comma y1 lie on U is equal to 0. Okay. Now what does this imply? ये इसको satisfy करेगा इस equation को. Therefore I have that x1 comma y1 satisfies the equation u is equal to 0. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एंड इसका मतलब है दैट हम x के बदले x1 लिख सकते हैं एंड हम y के बदले y1 लिख सकते हैं. So therefore we will have that a1 x1 plus b1 y1 plus c1 is equal to 0. Okay, now what I am going to do is I am going to check whether ये जो point P है जो अभी फिलहाल सिर्फ U पे है, does it satisfy the equation UV is equal to 0? तो हम वही करने वाले हैं to show that
So we want to show that x1 comma y1 satisfies the equation u into v is equal to 0. So for that, you consider u into v. This is equal to a1x plus b1y plus c1 into a2x plus b2y plus c2. ओके, अभी हम क्या करेंगे, जहां पे भी x और y है वहां पे हम क्या करेंगे, x1 y1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इट जस्ट बिकम्स, जहां पे भी x और y है आई एम जस्ट राइटिंग x1 एंड y1. ओके, so now what happens is, because x1 y1 satisfy करता है u is equal to 0 को, so that means that when I put this equation यहाँ पे a1 into x1 plus b1 into y1 plus c1, I know that the value is equal to 0 from star. Okay, so इधर मुझे 0 लिखना पड़ेगा into a2 x1 plus b2 y1 plus c2. Okay, and this is overall equal to 0, and this implies that x1 comma y1 satisfies the equation of uv is equal to 0. Now, if x1 comma y1 satisfies uv is equal to 0, then I had taken any random point था, मैंने कोई भी point उठा के लिया था u is equal to 0 पे. इसका क्या मतलब होगा कि चाहे कोई भी point हो u is equal to 0 पे, वो पक्का uv is equal to 0 को भी satisfy करेगा. Okay, so therefore we can write that any point on the line, instead of any you can also write every point. ठीक है, कोई भी पॉइंट या फिर हर कोई पॉइंट ऑन द लाइन u is equal to 0 satisfies the equation uv is equal to 0. ठीक है, now once we have shown this, हमने क्या दिखाया कि कोई भी पॉइंट जो u is equal to 0 पे है वो uv is equal to 0 पे भी है. Can I similarly show that if any point lies on v is equal to 0, तो फिर वो भी uv is equal to 0 पे होगा. क्या होगा उस केस में, just as this second equation, यहाँ पे ये 0 होगा, this part, because यहाँ पे I will be able to say that a2x1 plus b2y1 plus c2 is equal to 0 because it lies on v is equal to 0. So this you don't need to prove exactly, you can just write similarly, if a point lies on v is equal to 0, then it satisfies uv is equal to 0. Now we need to do the opposite. Now what we have to do is we have to see that if uv is equal to 0 पे कोई भी point है, तो क्या वो u is equal to 0 या v is equal to 0 पे है. So for this we take one point, let's say r. So let r, let's call this as x2 comma y2 be any point which satisfies uv is equal to 0. Okay, so what does this imply? That a1 x2 plus b1 y2 plus c1 into a2 x2 plus b2 y2 plus c2 is equal to 0. बराबर. Now because of this I can say कि if the product of two brackets is equal to 0, मतलब अगर a into b is 0, इसका क्या मतलब होता है कि either a is equal to 0 और b is equal to 0, या फिर दोनों भी 0 हो सकते हैं. So this implies that first bracket is equal to 0 और second bracket is equal to 0. Now अगर ये first bracket is equal to 0, then what does this mean? That x2 comma y2 satisfies u is equal to 0. So you can say that r satisfies the equation u is equal to 0, पहली वाली चीज से, या फिर if you look at the second thing, it will satisfy v is equal to 0. तो either ये होगा u is equal to 0 पे या फिर v is equal to 0 पे, and that means कि अगर कोई भी point है on uv is equal to 0, वो either u is equal to 0 पे है या फिर v is equal to 0 पे है. Isn't that what we wanted to prove? So every point
on uv is equal to 0 lies on the line u is equal to 0 or v is equal to 0. You can write the line v is equal to 0. Okay, and therefore we can say that uv represents the combined equation of u is equal to 0 and v is equal to 0. मतलब अगर कोई भी पॉइंट है u is equal to 0 या v is equal to 0 पे, वो पक्का होगा ही on uv is equal to 0 and vice versa भी ट्रू है कि अगर uv is equal to 0 पे है तो u is equal to 0 and v is equal to 0 को भी satisfy करेगा. ठीक है, तो एक्चुअली अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का जो कंबाइंड इक्वेशन होता है वो ये सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो इन दोनों लाइंस पे है. ठीक है, मिला के ऑल दीज पॉइंट्स का एक साथ इक्वेशन देता है this combined equation of these two lines. Now we will look at a few remarks and then we will do a few sums. So the first remark over here is that the combined equation of a pair of lines is also called as the joint equation of a pair of lines. ये बस उसके लिए एक दूसरा नाम है. And also ये जो u is equal to 0 and v is equal to 0 है, they are called as the separate equations of the lines represented by uv is equal to 0. तो हम लोग को क्वेश्चंस में कभी कभी बोलते हैं क्यों फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, कभी कभी बोलते हैं क्यों फाइंड द सेपरेट इक्वेशन. ओके, नाउ लेट अस लुक एट अ फ्यू क्वेश्चंस. Find the combined equation of the line x plus y minus 2 is equal to 0 and 2x minus y plus 2 is equal to 0. तो यहाँ पे if you observe, ये जो पहला वाला पार्ट है this is u is equal to 0 and this is v is equal to 0. तो हम लोग ना ये क्वेश्चंस में यूजुअली ऐसे लिखते हैं that the combined equation, क्योंकि ऐसे फॉर्मूला डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते तो हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं फॉर्मूला के नाम पे that the combined equation of the lines u is equal to 0 and v is equal to 0 is uv is equal to 0. Okay, so therefore combined equation is, क्या करना होगा हमें, x plus y minus 2 into 2x minus y plus 2 is equal to 0. ठीक है, isn't this easy? बस सब कुछ को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ, राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 होना चाहिए और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. दैट्स इट, इट्स दैट इजी. अभी बस इसको ओपन करना है. तो नाउ वी विल मल्टीप्लाई ईच टर्म. तो पहले x को इन सबसे मल्टीप्लाई करते हैं. तो वी विल गेट x into 2x which is 2x square. Next x into minus y which is minus xy. Next x into 2 which is 2x. Now next y into everything. Okay, so it is 2xy minus y square plus 2y. Okay, and now I multiply minus 2 by everything. So I get minus 4x plus 2y minus 4 is equal to 0. Okay, अभी इसको कैसे लिखना है, you have to write x square सबसे पहले. ठीक है, सेकेंड थिंग यू शुड राइट एक्स वाई वाला टर्म. एक्स वाई वाले टर्म दो है. वी हैव माइनस एक्स वाई एंड प्लस 2 एक्स वाई. दोनों को कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट जस्ट एक्स वाई. सो यू राइट नेक्स्ट इज एक्स वाई टर्म. उसके बाद यू राइट वाई स्क्वायर वाला टर्म. ओके, देन उसके बाद यू राइट ओनली एक्स वाला टर्म. सो दैट इज 2x एंड माइनस 4x which is minus 2x. Next you write down only y वाला term which is 4y and lastly you write down minus 4 is equal to 0. This is the combined equation of these two lines. Okay, it's easy, right? सिर्फ multiplication करना है. Fine. Let us look at the next question. Find the combined equation of the lines x minus 2 is 0 and y plus 2 is equal to 0. यहाँ पे भी you should write down that statement first that the combined equation of the lines u is equal to 0 and v is equal to 0 is uv is equal to 0. Okay. So therefore now here what will you do? You can say that the combined equation is, we have x minus 2 into y plus 2 is equal to 0. So on multiplying this we get x into y plus 2x. ठीक है, पहले सबको x से मल्टीप्लाई किया, अभी सबको माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड दैट्स इट.
That is our combined equation. Okay. Now let us look at the third question. Find the combined equation of the lines x minus 2y is 0 and x plus y is equal to 0. पहले सेम कहानी लिखना है, ठीक है, and then you write the combined equation is. Correct? You just have to multiply these two. Already सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ही है, तो बस मल्टीप्लाई करना है. पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो we get x square plus x into y minus now 2xy and minus 2y square is equal to 0. Okay. And here we can combine these two terms and therefore we get that x square minus xy minus 2y square is equal to 0. Okay. Now let us look at the next question. Find the separate equation of the lines represented by x square minus y square plus x plus y is equal to 0. हम लोगों को ये सेपरेट करना है, ठीक है. अभी फिलहाल जो दिया है दैट इज गिवन एज u इंटू वी इज इक्वल टू 0. ठीक है. देखो अगर क्वाड्रेटिक है इसका मतलब है पक्का कंबाइंड ही है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमेशा लीनियर होता है. अब इसको सेपरेट करना है. इसको सेपरेट करने के तरीके हम बाद में सीखेंगे, बट यहाँ पे एक ट्रिक यूज करके करना है. तो हम लोगों को पता है दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स माइनस वाई into x plus y. Okay, and then we already have an x plus y over here. Now what we will do is from these two terms we take x plus y common, so we get x plus y into, now first bracket से we are left with x minus y. यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, right, this is multiplied by 1 is equal to 0. So we have got two brackets ना, दोनों linear है, so therefore we can say that the separate equations are x plus y is equal to 0 and next is x minus y plus 1 is equal to 0. Okay, so these are the two separate equations. ठीक है, और ये उनका combined equation हमें दिया हुआ था. Now that we have solved these questions, let us look at the next part, that is homogeneous equation of degree 2. So now थोड़े टाइम के लिए हम थोड़े से साइड ट्रैक हो रहे हैं, ठीक है, एंड उसके बाद हम वापस देखेंगे हाउ इज दिस रिलेटेड टू व्हाट वी आर स्टडिंग राइट नाउ. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग इज डिग्री ऑफ अ टर्म. डिग्री ऑफ अ टर्म क्या होता है? तो द सम ऑफ ऑल द इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल्स इन अ टर्म इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ द टर्म. मतलब जो भी सारे पावर है ना उन सबको ऐड करके जो भी मिलता है वो होता है डिग्री. तो फॉर एग्जाम्पल इस एक्सप्रेशन में जो एक्स स्क्वायर है दैट उसका डिग्री है 2. ठीक है, क्योंकि ये तो स्क्वायर है ना. इधर इसका डिग्री देखोगे तो क्या है, x का डिग्री 1 है, y का डिग्री 1 है. इन दोनों को ऐड करोगे 1 प्लस 1 तो इसका डिग्री भी 2 मिलता है. नेक्स्ट इसका डिग्री भी इज इक्वल टू 2 बिकॉज y स्क्वायर है, एंड देन योर द डिग्री इज 1 बिकॉज ओनली 1 वेरिएबल. ठीक है. 2 का डिग्री इज कॉल्ड 0. ठीक है. 2 का डिग्री इज सेड टू बी 0 बिकॉज इट इज x रेज टू 0 ना ओवर हियर और y रेज टू 0, इसलिए इसको 0 बोलते हैं. और अगर 0 होता है तो इसकी जो डिग्री है उसको हम डिफाइन नहीं करते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट हमें होमोजीनियस इक्वेशन का डेफिनेशन देखना है. an equation in which the degree of every term is the same. ठीक है. तो अगर degree of every term is the same तो हम बुलाते हैं इसको homogeneous equation. यहाँ पे देख रहे हो सारे terms का degree same नहीं है. पहले तीन का 2 है लेकिन फिर 1 and 0 है, so that is not a homogeneous equation. So for example, suppose let us write an equation in x and y जहाँ पे सबका degree 2 है, तो वो कैसा होगा? It will be x square plus let's say y square plus let's say 5 in x into y is equal to 0. ऐसा कुछ हो सकता है एक homogeneous equation of degree 2. Suppose I ask you to write a homogeneous equation of degree 3, so it can be x cube, फिर it can be 3y cube, it can be plus 5x square into y minus 5xy square is equal to 0. ऐसा कुछ हो सकता है. ठीक है. नाउ जो हमारे मतलब की बात है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2,
ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखते हैं, वैसे ही एक होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन वेरिएबल्स x and y is represented by this expression: ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. This is a homogeneous equation of degree 2 in the standard format. Okay. Now let us see how is this related to pair of straight lines का equation. Now the combined equation of a pair of lines passing through the origin is a homogeneous equation of degree 2 in x and y. So suppose I have two lines, okay, and they pass through the origin. So suppose this is our x and y axis and this is the origin. So इसके through pass हो रहे हैं दो lines. The first line is this: u is equal to 0. Second is v is equal to 0. Now there is one very important thing that you have to understand about any line that passes through the origin. उसमें कोई constant term नहीं होता है, because वो कैसे टाइप के होते हैं? They are always equal to y is equal to mx वाले lines, ठीक है? या फिर ax plus by is equal to 0. They have no constant term, क्योंकि इनमें कोई y इंटरसेप्ट होता नहीं है, c का वैल्यू 0 होता है. या फिर एक और चीज ऐसे सोच सकते हो कि 0,0 इससे पास होता है, तो द ओनली वे वो सेटिस्फाई करेगा इफ देयर इज नो कांस्टेंट टर्म. ओके, सो ये जब ऐसे दो लाइन होते हैं दैट पास थ्रू द ओरिजिन और उसका कंबाइंड इक्वेशन देते हैं हम लोग, तभी वी गेट द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. ठीक है, सो लेट अस सी दिस आल्सो बाय प्रूविंग इट. तो लेट a1x plus b1y is equal to 0 and a2x plus b2y is equal to 0 be any two lines passing through the origin. ठीक है, बेसिकली ये u is equal to 0 and v is equal to 0 को मैंने ऐसे लिया. तो अभी इनका कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा? So the combined equation is, we just have to multiply them ना. So this implies, let us multiply this: a1 a2 x square plus a1 b2 xy plus a2 b1 xy plus b1 b2 y square is equal to 0. Okay. Now if you observe this, हमारे पास ना ऐसा ही कुछ है, x square xy और y square वाले टर्म. अगर थोड़ा इसको बराबर से लिखेंगे तो मिलता है a1 a2 ब्रैकेट में डाल के x square, ओके, प्लस a1 b2 प्लस a2 b1 इंटू xy प्लस b1 इंटू b2 y square is equal to 0. Okay, so what does this mean? That हमारे पास ऐसा ही इक्वेशन आया है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है. If I put a1 into a2 is equal to a. Okay, then if I put a1 into b2 plus b1 into a2 is equal to 2h, and if I put b1 into b2 is equal to b, then what do I get from this? We get ax square plus 2h xy plus by square is equal to 0. ठीक है, so this is a homogeneous equation of degree 2 in x and y, and hence whenever we have two lines that pass through the origin, उनका combined equation लेंगे ना, क्योंकि constant term नहीं है, तो सारे x y ऐसे सिंगल वाले जो x and y वाले टर्म्स थे, constant term था, वो होगा ही नहीं. We will have only a homogeneous equation of degree 2. So you can write over here which is a homogeneous equation of degree 2. Okay, now let us go to the next part. Verify that the combined equation of the line 2x plus 3y is equal to 0 and x minus 2y is equal to 0 is a homogeneous equation of degree 2. तो हमें बस चेक करना है कि इसका जो कंबाइंड इक्वेशन है वो होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं. तो पहले तो हम कंबाइंड इक्वेशन ढूंढते हैं. So the combined equation is 2x plus 3 into x minus 2y is equal to 0. Okay, let's multiply. So we get 2x square
फिर 2x इंटू -2y मतलब -4xy प्लस 3xy minus 6y square is equal to 0. ठीक है, on combining we get 2x square minus xy minus 6y square is equal to 0. Okay, and this is a homogeneous equation of degree 2. So therefore we can say that if we have two lines that pass through the origin, तो वो definitely उसका जो combined equation है that is a homogeneous equation of degree 2. लेकिन if I have a homogeneous equation of degree 2, is this necessary that it should pass through the origin? क्या ऐसा जरूरी है? So the combined equation of a pair of lines passing through the origin is a homogeneous equation of degree 2. ये हमने प्रूव किया. But every homogeneous equation of degree 2 need not represent a pair of lines. It is not necessary that it will represent a pair of lines. For example, x square plus y square is equal to 0. ठीक है, इसको स्प्लिट ही नहीं कर पाओगे टू गेट अ पेयर ऑफ लाइंस. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कैसे स्प्लिट करोगे? And is equation actually, if you look at only the real solutions of this equation, it is actually not possible also to get real solutions over here. Okay, only when x and y both are 0, then only you get a solution for this equation. In all other cases, there is no real solution for this equation. Okay, complex solutions hai. So this is a counter example यहाँ पे कि दिखाने के लिए कि homogeneous equation है degree 2 का, x square plus y square is 0. लेकिन ये कोई स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. देखो, क्योंकि ये स्प्लिट ही नहीं करेंगे ना. कैसे स्प्लिट करेंगे? कैसे इसको दो हिस्सों में से दो ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे? ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्प्लिट. अदर देन दैट, इसको सेटिस्फाई करने वाले कोई भी एक्स और वाई सिर्फ 0,0 ही मिलता है रियल में. बाकी सब कुछ कॉम्प्लेक्स ही होना पड़ेगा, क्योंकि दो स्क्वायर्स तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं ना. तो दो पॉजिटिव चीजों का एडिशन कैसे 0 हो सकता है? ठीक है, तो इस वजह से सारे कॉम्प्लेक्स यू कैन ड्रॉ देम, सो इट इज डेफिनेटली नॉट अ लाइन. ओके, so this is a very important result over here. Now we will have to put a condition कि कब ये homogeneous equation of degree 2 एक pair of straight lines को represent करता है. इसके लिए हमारे पास एक condition है. ठीक है, देखो, अगर कोई lines है that pass through the origin, they are always, उनका combined equation always homogeneous equation है. लेकिन ये homogeneous equation सिर्फ एक particular condition satisfy करने पे ही एक pair of lines को represent कर सकता है. Okay, and in the next theorem now we will look at what is that condition. Homogeneous equation of degree 2 in x and y, that is ax square plus 2xy plus by square is equal to 0. ये homogeneous equation है ना, represents a pair of lines passing through the origin if h square minus ab is greater than equal to 0. So this is your condition to ensure that this homogeneous equation represents a pair of lines. Okay, अभी इसको प्रूव करने के लिए we have to consider two cases. फर्स्ट केस में हम b को 0 लेते हैं, दूसरे केस में हम b को 0 नहीं लेते हैं. ठीक है, तो हमें बेसिकली ये दो केसेस कंसिडर करने होंगे. So first of all, let me write down this equation. ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. ठीक है, you can write, we consider two cases. Case 1, b is equal to 0. ठीक है, what happens in this case? We get that ax square plus 2hxy plus 0 is equal to 0. अब क्या इसको स्प्लिट कर सकते हैं? यस ना, हम इसमें x को कॉमन ले सकते हैं. So we get x common and we have ax plus 2hy is equal to 0. ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है and they both represent lines. Okay, so you can say the separate equations are x is equal to 0 and ax plus 2hy is equal to 0. Okay, now if we have these two equations, मतलब क्या था कि अगर b is equal to 0 है, मतलब always we can make
अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। और उसमें से क्या होता है, एक है वाई एक्सिस, दूसरा वाला है एक नॉर्मल लाइन जिसमें कोई कांस्टेंट नहीं है। एंड कैन यू ऑब्जर्व कि वाई एक्सिस एंड ये दूसरा वाला लाइन दोनों ही ओरिजिन से पास करते हैं, करेक्ट। सो यू कैन से विच इज द इक्वेशन of two lines that pass through the origin, and one of them is the y-axis. Okay, x is equal to 0. You can note over here that x is equal to 0 is the y-axis, and ये जो दूसरा लाइन है उसका स्लोप क्या होगा ये भी निकाल सकते हो, that 2hy is equal to minus ax, so therefore y is equal to minus a by 2hx. तो जो भी x का कोएफिशिएंट होता है ना, जब y अकेला होता है दूसरे साइड पे, वो होता है इस लाइन का स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप इज माइनस ए डिवाइडेड बाई 2h। हमें ये चीजें मिलती है फ्रॉम द फर्स्ट केस व्हेन वी कंसिडर दैट b is equal to 0. Okay, this is the first easy case. Now next case में what will we do? We will consider that b is not equal to 0. Let's do that now. So case 2 now, we have that b is not equal to 0. अगर b 0 नहीं है then we can multiply throughout by b, ठीक है। इस रीजन से हमने ये दो केसेस कंसिडर किए। So now it becomes ab x square plus 2hb xy plus b square y square, ठीक है, is equal to 0. Now, over here, what I am going to do is I will keep the last two terms on one side, the other first term I'll take on the other side, okay? So therefore, I get 2hb xy plus b square y square is equal to minus ab x square. Fine. Now what we will do over here is we will try to complete the square on the left hand side. लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं स्क्वायर कंप्लीट करना चाहूँ तो ये वाला है बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वो मिडिल वाला टर्म है, 2ab वाला जो टर्म होता है ना वो है। इसमें ये b और y तो दिख रहा है जो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। h और x एक्स्ट्रा है ना, तो वी विल हैव टू ऐड h स्क्वायर एंड x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो एडिंग h square x square on both sides we get, so यहाँ पे we have h square x square plus 2hx dy plus b square y square, and दूसरे साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा, ऐसे एक साइड पे ही सिर्फ नहीं कर सकते। okay, and now what I will do is on the left hand side I basically have hx plus by the whole square. Right hand side पे I can take x square common and I have h square minus ab. Okay, so basically now what I will do is I will take this to the other side, fine, and here I have that hx plus by the whole square minus x square into ये जो टर्म है ना मैं ऐसे लिखती हूँ h square minus ab का स्क्वायर रूट एंड इसका फुल स्क्वायर, ये होगा h square minus ab ओनली ना, मतलब मैंने स्क्वायर रूट लिया फिर स्क्वायर लिया, लेकिन एक कंडीशन है इसके लिए, मैं इसको सिर्फ तभी कर सकती हूँ जब ये h स्क्वायर माइनस ab पॉजिटिव है। देखो सब कुछ पॉजिटिव है यहाँ पे, ये दोनों चीज स्क्वायर है, तो अगर इसको भी किसी नंबर के स्क्वायर के जैसे रिप्रेजेंट करना है तो दिस हैज टू बी पॉजिटिव, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। So you have to write over here that because हम लोगों ने ये लिया हुआ भी है, राइट, वो कंडीशन था जो अपने क्वेश्चन में था, इसलिए हम कर पा रहे हैं that since h square minus ab is greater than equal to 0, इसलिए हम ये कर सकते हैं। okay, now this is of the form a square minus b square, इस टाइप का है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कैपिटल A माइनस कैपिटल B, कैपिटल A प्लस कैपिटल B। तो यहाँ पे ये कैपिटल A और ये कैपिटल B, so therefore we get that hx plus by minus x into h square minus ab का स्क्वायर रूट, this is one bracket, second bracket will be hx plus by plus x into square root of h square minus ab is equal to 0. Okay, so we have got two brackets, and now if you observe ये दोनों brackets में सिर्फ x and y है, linear है, no constant term, so these are two lines that pass through the origin.
We only have to write that much now. So these are our two lines, correct? And we can say that the separate equations are these two lines. So therefore you can write. So separate equations are h plus square root of h square minus ab into x plus by is equal to 0 and h minus square root of h square minus ab into x plus by is equal to 0. Okay, so we have these two equations, and if you observe, both of them are actually equations that pass through the origin only. Okay, and what is the slope of these two lines? तो पहले लाइन का स्लोप निकालने के लिए you just have to take y on one side. ठीक है, y को एक साइड पे रखना है. तो in that case we will just get that dy is equal to minus h plus square root of h square minus ab into x. ठीक है, and therefore अगर मैं b से divide करूंगी then the slope over here is equal to minus h plus square root of h square minus ab divided by b. Okay, this is the slope of the first line. सेकेंड लाइन में भी यही चीज होगा, बस वो माइनस साइन से वो इंटरचेंज हो जाएगा, एंड द सेकेंड लाइन का स्लोप विल बी माइनस h minus square root of h square minus ab divided by b. ठीक है, you can take that minus sign inside also, तो वो interchange हो जाएगा negative sign. ठीक है, and these are the slopes of the line. Fine. Therefore, we can say that a homogeneous equation of degree 2 in variables x and y can represent a pair of lines passing through the origin only if h square minus ab is greater than equal to 0. Because अगर वो नहीं होता तो फिर हम ये वाला स्टेप नहीं कर पाते, और अगर हम ये स्टेप नहीं कर पाते तो हम फैक्टराइज नहीं कर पाते. ओके, so that is why this is a very important condition. Now let us look at a few remarks. Now the first one is that if h square minus ab is greater than 0, okay, if it is greater than 0, then this means that the lines represented by this are distinct. हमें अलग lines मिलते हैं. Now we have to understand why. अगर h square minus ab 0 होता तो फिर क्या मिलता हमें? This would become 0. So we would have that hx plus by the whole square is equal to 0. And basically I would just have that ये दो brackets हैं, ठीक है, hx plus by into hx plus by. इसका मतलब है that हमें same line ही मिलता, ठीक है, and therefore लिखा हुआ है ऐसे that the lines are distinct only when ये अलग है, ठीक है, when it is greater than 0. अगर ये 0 है then they are coincident. So if it is greater than 0, distinct. If it is equal to 0, coincident. But it does represent a pair of lines. लेकिन अगर h square minus ab is less than 0, then it does not represent a pair of lines. Okay. Now, if h square minus ab is greater than equal to 0 and b is not equal to 0, ठीक है, मतलब case 2 में we get these two as the slopes of the line. We have already written that on the previous slide, right? That is exactly what is written over here. अभी इन दोनों का sum क्या है? What is m1 plus m2? So m1 plus m2 is equal to minus h minus square root of h square minus ab. डिनोमिनेटर तो सेम है तो एक साथ ही लिख सकते हैं, ठीक है. This whole thing divided by b. Now over here you can see that this gets cancelled and therefore we have that minus 2h divided by b. This is the sum of the slopes. Okay. Now to find the product we have to multiply these two. So m1 into m2 is going to be equal to minus h minus square root of h square minus ab, correct, into minus h plus square root of h square minus ab. This is of the type a minus b, a plus b, divided by b into b, which is b square. Now ऊपर हमें क्या मिलेगा? We will get minus h the whole square, which is equal to h square माइनस जो ये स्क्वायर रूट के अंदर है उसका स्क्वायर. तो दैट बिकम्स h स्क्वायर माइनस ए बी, जिस स्क्वायर रूट साइन ही चला जाता है, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर.
Now h square gets cancelled and therefore we are left with ab divided by b square. एक b cancel हो जाता है and we are left with a by b. So the product is a by b and the sum is minus 2 by h. Okay. So now if you look at these two things, we have that the sum is minus 2h by b and product is a by b. Can we form a quadratic equation जिसके रूट से m1 और m2 होंगे? Now I'm sure you already know कि अगर I have two roots alpha and beta, then इसका अगर quadratic बनाना है, कोई quadratic जिसका आंसर ये है, then we do it by writing x square minus alpha plus beta sum of the two roots into x plus the product of the two roots alpha into beta. We are going to use the exact same strategy over here and therefore here it is going to be m square minus क्या होगा, it will be m1 plus m2 into m. Basically यहाँ पे जो m है ना, that acts as हमारा variable x plus m1 into m2 is equal to 0. Now यहाँ पे we just found out the value for m1 plus m2. It is minus 2h by b. So यहाँ पे this will be minus 2h by b into m plus this we just found out as a by b. Okay. Now on opening this I get m square plus 2h by b into m plus a by b. Let's multiply throughout by b. So therefore we get that b m square plus 2hm plus a is equal to 0. ठीक है. So this is the quadratic that you have to solve in order to find out the slopes m1 and m2. एक बार slopes मिल गए उसके बाद तो हम हमेशा लिख सकते हैं ना that the lines are y is equal to m1x and y is equal to m2x. हमें वो स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है कोई भी और तरीके से, हम ऐसे ही m1 और m2 निकाल सकते हैं. तो ये जो इक्वेशन है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसको हम बुलाते हैं एज दी ऑक्सिलरी इक्वेशन. ठीक है. और इसके ही हमें स्लोप्स की जरूरत है. सो दिस इज कॉल्ड एज दी ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द ओरिजिनल होमोजीनियस. So हम लोग क्या करते हैं हमेशा, we always find the auxiliary equation, then we find out the solutions of that auxiliary equation and then we can split our lines. Okay. Now let us do a few questions based on this. The first question that we will solve now says that show that the lines represented by the equations x square minus 2xy minus 3y square is equal to 0 are distinct. तो हमें दिखाना है कि इससे जो लाइंस रिप्रेजेंट होती है वो डिस्टिंक्ट है. Now to do this, what we will do is we will calculate what is the value for h square minus ab. अगर h square minus ab according to the previous remark अगर वो strictly greater than 0 है then the lines are distinct. Okay. So first of all we will compare this with the standard equation, find out the value for a, h and b. Two hxy plus by square is equal to 0, we get that a is equal to 1, b is equal to minus 3 and h is equal to, तो यहाँ पे 2h is equal to minus 2, so therefore h is equal to minus 1. So now therefore we have the value for a, b and h and abhi we will find h square minus ab. H square minus ab is equal to minus 1 the whole square minus a into b, okay, which is equal to, now this is 1 minus 1 into minus 3, so this will just become 1 plus 3 which is equal to 4, which is strictly greater than 0 and therefore as h square minus ab is strictly greater than 0, the lines represented by this are distinct. We will just write that down now and then we are done. Let's go to the next question now. Show that the lines represented by the equation x square minus 6xy plus 9y square is equal to 0 are coincident. Same चीज करना है, बस we have to show that h square minus ab is equal to 0 over here. So first of all on comparing,
this equation to ax square plus 2hxy plus by square we get. We get that a is equal to 1, we get that b is equal to 9, and we get that 2h is equal to minus 6, and therefore h is equal to minus 3. Fine. Now when we find h square minus ab, we get that this is minus 3 the whole square minus 1 into 9, which is equal to 9 minus 9, which is equal to 0. Therefore, since h square minus ab is equal to 0, the lines represented by x square minus 6xy plus 9y square is equal to 0 are coincident. Let's do the next question now. Find the sum and the product of the slope of the lines represented by x square plus 4xy minus 7y square is equal to 0. यहाँ पे भी let us find out the value for a, h and b. ठीक है? So here I am not writing down the statement now, but we know that a is 1, फिर h का value क्या आएगा 2 because 2h is equal to 4 and b का value will be minus 7. ठीक है? Now हम लोग को already पता है, we have already done that, कि what is the sum of the slopes and what is the product of the slopes. So you can directly write that sum of the slope is given by minus 2h by b, which is equal to minus 2 into 2 divided by minus 7, which is equal to 4 by 7. So this is the slope of the, so this is the sum of the slopes of the line. And now we have to look at the product. So the product is given as a by b, which is equal to 1 by minus 7. So this is equal to minus 1 by 7. Okay. So therefore we have got the sum and the product of the slopes of the line. Fine. Let us do the next part now. In the 8th question, here we have 4 subparts. Okay. So here we have to find the separated equations of the lines represented by. Now here अगर split कर सकते हैं तो split कर लो, लेकिन अगर split नहीं कर सकते then we will find the auxiliary equation. Okay. तो first वाले को तो split कर सकते हैं. It is of the type a square minus b square. इसको split करना is easy. We have x square minus 4y square is equal to 0. We can write this as x minus 2y into x plus 2y is equal to 0. Okay. Therefore, the required separate lines are x minus 2y is equal to 0 and x plus 2y is equal to 0 are the separate lines. Let's do the second subpart now. Here we have 3x square minus 7xy plus 4y square is equal to 0. यहाँ पे also let's see if we can split. तो हमारे पास 3 into 4 है which is 12 और 12 को हम split कर सकते हैं as 3 into 4 only. तो I can write ये जो 7xy है ना, इसको लिख सकते हैं as minus 3xy and minus 4xy. ठीक है, we'll get the same thing. So let's do that. So I'm going to split this. So I'm going to write this as 3x square minus 3xy minus 4xy plus 4y square is equal to 0. जैसे हम एक normal quadratic को split करते हैं वैसे ही किया है मैंने. I take 3x common, then I get x minus y, and here if I take minus 4y common, then I get x minus y is equal to 0. Therefore, we have 3x minus 4y into x minus y is equal to 0. Fine. So therefore, the separate equations are 3x minus 4y is equal to 0 and x minus y is equal to 0. Fine. Now let us do the third subpart. In the third subpart we have x square plus 2xy minus y square is equal to 0. अभी यहाँ पे it is going to be difficult to factorize this. Okay? ये split नहीं होगा ऐसे ही. तो इसके लिए हम auxiliary equation में convert करते हैं. So we can write
The corresponding auxiliary equation is, so auxiliary equation is given by this. इसके लिए हमें a, b और h के values चाहिए. So if I compare over here, I get that a is equal to 1. I get h is also equal to 1 क्योंकि 2h is 2 and b is equal to -1. On substituting, we get that minus m square plus 2m plus 1 is equal to 0. Therefore, m square minus 2m minus 1 is equal to 0. इसके रूट्स ढूंढने हैं हमें, ठीक है. So this is given as m is equal to minus b. तो मैं b square minus 4ac वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ. So this will be minus of minus 2 plus minus square root of minus 2 the whole square is 4 minus 4 into ac which is minus 1 into 1 divided by 2a. लेकिन यहाँ पे a का वैल्यू 1 है तो it is just 2. Now this is equal to 2 plus minus square root of 4 plus 4 मतलब 8 divided by 2. इसमें से हम 2 बाहर निकाल सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं as 2 root 2 और फिर वो 2 कैंसिल हो जाता है. So this is 1 plus or minus root 2. Fine. So now we have got the slopes. So therefore our lines are equal to. So slope is 1 plus root 2, 1 minus root 2. And therefore our lines are y is equal to 1 plus root 2 into x. ठीक है, y is equal to m1x and second line is y is equal to 1 minus root 2x. These are the separate equations. इसको एक साइड पे लेके लिख सकते हैं. So you can write that separate equations are, first one is 1 plus root 2 into x minus y is equal to 0 and 1 minus root 2 into x minus y is equal to 0. Fine. So we have these two equations. Fine. Let us do the next question now. We have 5x square minus 3y square is equal to 0. We can do this by a square minus b square. तो इसको बस लिखना पड़ेगा as root 5 the whole square और इसको लिखना पड़ेगा as root 3 the whole square. So this becomes root 5x minus root 3y into root 5x plus root 3y is equal to 0. And therefore, ऐसे split कर रहे हैं तो the separated equations are, or the separate equations are root 5x minus root 3y is equal to 0 and root 5x plus root 3y is equal to 0. Fine. These are the two separate equations. Okay. Now let us look at the next question. Find the value for k if 2x plus y is equal to 0 is one of the lines represented by 3x square plus kxy plus 2y square is equal to 0. Now, what you have to realize from here is that ये जो line दिया है यहाँ पे 2x plus y is equal to 0, इसका slope क्या है? We can say that slope of this line is equal to, so let me call this as L1 suppose. तो slope of L1 is equal to 2x को दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो y is equal to minus 2x आएगा ना, तो इस वजह से we will get that the slope is minus 2. तो ये जो minus 2 है, this has to satisfy the auxiliary equation. ठीक है, so minus 2 is a root of the auxiliary equation and therefore we can say that auxiliary equation क्या है? So auxiliary equation over here is going to be 2m square plus km plus 3 is equal to 0. Now अगर एक ट्रिक चाहिए तो रिमेम्बर कि ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालना है. क्या कर सकते हो, दैट बेसिकली तुमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है y बाय x को m के जैसे. ठीक है, y बाय x को एक्चुअली m सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ऑक्सिलरी मिल जाता है. एक और तरीका भी है, y को m डालो और जहाँ पे भी x है उसको 1 डाल दो तो फिर भी तुरंत ही ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाता है. ठीक है,
So if minus 2 is the root of this, it will satisfy this, and therefore we will have that 2 into minus 2 the whole square plus k into minus 2 plus 3 is equal to 0, and therefore 2 into 4 is 8 plus 3 minus 2k is equal to 0, and therefore 2k is equal to 11, and therefore k is equal to 11 by 2. Okay, and this is going to be the value for k. Easy. Let us do the next question now. Find the condition that 3x minus 2y is equal to 0 coincides with one of the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. तो यहाँ पे we have to find the condition कि ये coincide करता है, मतलब इनमें से किसी एक लाइन का स्लोप इस लाइन का स्लोप है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइन का स्लोप क्या है? 3x minus 2y is equal to 0. Suppose I call this as L1. Then slope of L1 is, so I take x to the other side, or in this case I take y to the other side, and then the coefficient of x is 3 by 2. So इसका slope है 3 by 2 over here. Okay. So therefore ये auxiliary equation को satisfy करेगा. So 3 by 2 is a root of the auxiliary equation, which is equal to bm square plus 2hm plus a is equal to 0. And therefore, it has to satisfy this equation. If I substitute this in place of m, we get b into 9 by 4 plus 2h into 3 by 2 plus a is equal to 0. I can multiply throughout by 4, and therefore, I will get that this is 9b plus 2 cancel हो जाता है, so we get 12h plus 4a is equal to 0. And this is precisely the condition that is required for this line to coincide with one of the lines. So this is the required condition. Let us do the next question now. Find the combined equation of the pair of lines passing through the origin and perpendicular to the lines represented by 3x square plus 2xy minus y square is equal to 0. तो हमें ये लाइंस दिया है, ये पेयर ऑफ लाइंस दिए हैं, ठीक है. सपोज दे आर समवॉट लाइक दिस, ठीक है. हम लोग को क्या करना है? वी वांट टू फाइंड द पेयर ऑफ लाइंस जो इसको परपेंडिकुलर है, इन दोनों को, ठीक है. तो पहली लाइन शायद इस वाले को ऐसे परपेंडिकुलर हो सकती है, एंड दूसरी वाली इसको परपेंडिकुलर हो सकती है, एंड हमें इन दोनों, ये जो डॉटेड लाइन में बनाया ना, उसका हमें कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, और ये ओरिजिन से भी पास होना चाहिए, ठीक है. इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, कर सकते हैं हम लोग. फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, हम लोग ना ये इक्वेशन से ये जो लाइंस है, जो ओरिजिनल लाइंस है, उनका हम स्लोप का सम एंड प्रोडक्ट ढूंढेंगे. ओके, सो वी राइट दैट लेट m1 and m2 be the slopes of the lines represented by 3x square plus 2xy minus y square is equal to 0. In this case, a is equal to 3, h is equal to 1, and b is equal to minus 1. Okay. Now, we can find m1 plus m2. m1 plus m2 is equal to minus 2h by b, which is equal to minus 2 by minus 1, which is equal to 2. And m1 into m2 is equal to a by b, which is equal to 3 divided by minus 1, which is equal to minus 3. Okay. Now, हमें क्या पूछा है? We have to find the combined equation of the line जो इन दोनों से perpendicular है. अब जो लाइन इससे perpendicular होगी इन दो लाइन से, उनका स्लोप क्या होगा? See, if any line is perpendicular to the line with slope m1, then it has to have slope as the negative reciprocal of m1. मतलब क्या है कि उसका स्लोप इंटू m1 शुड बी -1 ना, क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर है. सो देयरफॉर उसका स्लोप होगा -1 बाय m1, और दूसरे लाइन का स्लोप होगा -1 बाय m2. नेगेटिव रेसिप्रोकल्स, बिकॉज परपेंडिकुलर लाइंस है ना. Now, if lines have slopes this,
तो इक्वेशन क्या होगा, इट विल बी y इज इक्वल टू -1/m1x एंड दूसरा लाइन होगा y इज इक्वल टू -1/m2x। इनका हम कंबाइंड इक्वेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली वी विल हैव दैट m1 into y plus x is equal to 0 is one line, and next is m2 into y plus x is equal to 0 is the second line. इनका combined equation is x plus m1y into x plus m2y is equal to 0. तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस m2xy plus m1xy plus m1 into m2y square. Now we can write this as x square plus m1 plus m2 into xy plus m1 into m2y square. We already know the value for m1 plus m2 and m1 into m2. This is equal to 2 and -3 बराबर. So we will just substitute that here and we will get our answer. So x square plus 2xy minus 3y square is equal to 0 is the combined equation of the line that is perpendicular to the original equation. ठीक है, so this is a very standard method, इसी तरीके से करना है. So you have such questions in your exercise. Same procedure follow करना है हर जगह पे. First you have to find the sum and the product of the slopes. Then negative reciprocal होगा the slope of the required line, and then just write the equation and you will get exactly this. ठीक है, everywhere you get the same thing only. Now let us look at the last question of this video. Find the value for k if the slope of one of the lines represented by this is 4 times the slope of the other line. So let's say that agar slopes are m1 and m2, so we are given that m1 is equal to 4 times m2. Okay, so if m1 and m2 are the slopes, then m1 is equal to 4 times m2. Okay, so what can we say about the addition of these two? So when we talk about m1 plus m2, we have minus 2h by b. Okay, but in this case it is m1 is 4m2. So this is 4m2 plus m2 is equal to minus 2. h का वैल्यू क्या है? h is equal to actually over here 2h का वैल्यू k होगा. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ 2h नो आई विल राइट k डिवाइडेड बाय यहाँ पे b का वैल्यू इज 1. So therefore I can say that 5 times of m2 is equal to minus k. Okay, and hence I will say that m2 is equal to minus k by 5. Now next प्रोडक्ट भी कंसिडर कर सकते हैं ना. तो प्रोडक्ट के लिए m1 into m2 is equal to a by b. Okay, so therefore I can say that 4m2 square is equal to a का value is 4 divided by 1, and therefore we can say that m2 square is equal to 1. This means that m2 can be either 1 or minus 1. So if m2 is equal to 1, then in that case minus k by 5 is equal to 1, and this implies that k is equal to minus 5. Okay, but if m2 is equal to minus 1, then in that case minus k by 5 is equal to minus 1, and therefore this implies that k is equal to 5. Therefore the value for k can be equal to plus or minus 5. Okay, so this is the solution for this question. So in this video, I have covered the concept of the combined equation of lines, homogeneous equations. So I hope you have understood this. Now in the next video, we will be solving exercise 4.1 from question number 1 to question number 3.